Hello everyone, this is Sakshi Bhujbal. Welcome back to my AWS series. This is day 6 of our journey. Someone has asked me in comment section that can you please share the syllabus. I don't remember his name exactly because it's something like Buck said. So I really don't know whether it is he or she. So uh, like what exactly we are going to cover, what's the roadmap, and how deep we will go. Everything will be covered here. So today's video is going to be all about the syllabus of our AWS series. And trust me, if you stay till the end, you will know exactly what to expect and maybe even get excited about the hands-on stuff. So we will be doing together. So let's move. क्या हम So we'll start from very basics that we have studied, that is introduction to cloud computing. In that we have studied like what is cloud computing, what are its benefits, its advantages, applications and its features as well. So next topic we have covered that before cloud versus after cloud. Like this is like comparing old Nokia phone with today's smartphone. जो old Nokia phone थे पहले before smartphones, तो this is the comparison between them, just like that. So before cloud companies used to buy huge servers, okay, so they have to maintain them and cry when they crash. So after cloud it's just like renting Netflix. You don't own the DVDs, you just use the services. Simple, right? So also we have studied about the deployment models of cloud computing, just like private, public, hybrid and community. उसके बाद हमने स्टडी किया था क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मॉडल्स लाइक आस पास सास. Then we also have studied the overview of cloud service providers. कौन से cloud service providers होते हैं like AWS, GCP, Oracle, Microsoft Azure. Okay. Then we have also make an video on why choose AWS in cloud computing. So rather than other cloud providers, हमने सिर्फ AWS क्यों choose किया है ये भी हमने briefly understand किया है. Then we also studied the AWS global infrastructure. AWS का हमने global infra भी briefly study किया है. इसमें regions क्या होते हैं, availability zones क्या होते हैं, edge locations क्या होते हैं, कितने regions है, सब कुछ हमने briefly study किया था. तो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक उसमें लेफ्ट है, वो है AWS अकाउंट क्रिएशन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दैट. तो हमारा पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो AWS स्टडी करने के बाद वी हैव टू लाइक बिफोर डाइविंग डीप इनटू AWS सर्विसेज वी नीड टू लर्न लिनक्स बेसिक. हमें लिनक्स के बेसिक्स अंडरस्टैंड करने हैं बिफोर लर्निंग द एक्चुअल AWS services. Okay, but why we have to learn? Because AWS and Linux are like best friend. वो एक best friend की तरह है. Okay, so you will often launch Linux servers, so you must know how to move around. Okay, so we will cover commands like ls, mkdir, chmod. There are various commands we are going to learn on Linux. So you don't worry about मतलब क्या है, कौन सी लैंग्वेज है भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ls, chmod क्या बोल रहे हैं. It won't feel like that hacking in movies. Okay, so we will also explore user permissions, ownership, soft links, hard links, everything, every and all basic Linux commands we are going to cover. Then user creations, permission and ownership ये भी cover होने वाला है. और what is soft link and hard link, these concepts are also going to cover. So cloud computing के बाद हम Linux fundamentals का भी study करने वाले हैं. Now come to the heart of our syllabus. Actual syllabus क्या है? हमारे AWS series का जो heart है वो है AWS के various core services. So this is where you all really get the power of cloud in your hands. Okay, first service है EC2. EC2 stand for Elastic Compute Cloud. तो इसमें हम सीखने वाले हैं EC2 सर्विस इंट्रोडक्शन होने वाला है, उसके बेसिक्स EC2 सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग भी होने वाली है. देन की फीचर्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, देन कौन से EC2 इंस्टेंसेस के टाइप्स है, दीज आर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर. देन द इंस्टेंस कनेक्शन मेथड्स भी होने वाले. कौन से इंस्टेंट कनेक्शन मेथड्स होते हैं लाइक SSH, और डायरेक्टली भी हम वेब ब्राउज़र से भी कनेक्ट करते हैं. देन EC2 इंस्टेंस क्रिएशन होने वाला है लाइक ऑन लिनक्स मशीन और विंडोज़ मशीन, उसमें भी और
everything will be covered in the EC2 instance. तो हमारी सेकेंड कोर सर्विस होने वाली है VPC. VPC इज नथिंग बट दी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. इसमें हम VPC का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं. उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सबनेट, राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे. देन उसके नेटवर्किंग बेसिक्स भी हम सीखने वाले हैं. व्हाट आर द नेटवर्किंग बेसिक्स इन VPC, देन व्हाट आर द सबनेट्स, security groups in VPC, how to access the IP addresses in VPC, then how to create the VPC, how to see its source map, then net gateway in VPC, net gateway कैसे create किया जाता है, ये सब हम VPC में सीखने वाले हैं. एज वेल एज द पियरिंग कनेक्शन इन VPC क्या होता है, और जो ट्रांजिट गेटवे वो भी हम कवर करने वाले. यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट दैट विल आल्सो वी आर गोइंग टू कवर. देन व्हाट आर द VPC एंड पॉइंट, नैकल्स क्या होते हैं VPC में, और डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नैकल्स. और जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा फ्लो लॉग्स इन VPC. सो दिस इज आवर सेकेंड मेन कोर सर्विस. मूव टू द थर्ड सर्विस. तो थर्ड सर्विस होगी हमारी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. तो EBS इज द इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. इसमें EBS के कौन से वॉल्यूम टाइप्स है, वॉल्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है. देन EBS मल्टी अटैच कंसेप्ट भी हम सीखने वाले हैं. एज वेल EBS वॉल्यूम का माउंट अनमाउंट कैसे किया जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं. और इसमें फाइल सिस्टम कैसे बनाया जाएगा ये भी सीखने वाले हैं. देन स्नैपशॉट, जो हम इंस्टेंस का बैकअप कैसे लेंगे यूजिंग स्नैपशॉट, दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड. देन स्नैपशॉट टू वॉल्यूम कन्वर्जन भी होगा. और दिस इज आवर थर्ड सर्विस. मूव ऑन टू दी फोर्थ सर्विस, दैट इज ELB. तो ELB जो होती है वो है इलास्टिक लोड बैलेंसर. यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. देन इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर यूजर डेटा कंसेप्ट, देन एप्लीकेशन क्या होते हैं लोड बैलेंसर के, देन नेटवर्क लोड बैलेंसर. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक लोड बैलेंसर, लाइक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्लासिफायर लोड बैलेंसर, और वन मोर इज देयर जो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लाइक गेटवे लोड बैलेंसर. सो ये सब हम 1 by 1 सीखने वाले हैं. Then next service is the auto scaling. Auto scaling means what? Automatically increase or decrease the servers based on demand. So perfect for exam night, when suddenly everyone googles the same thing. Okay, so it is nothing but the auto scaling. तो यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. हाउ टू लॉन्च टेम्पलेट ओवरव्यू, देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, देन टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, मतलब कौन से पॉलिसीज होंगे ऑटो स्केलिंग में, ये सब हम कवर करने वाले हैं. तो हमारा नेक्स्ट सर्विस होगा S3, लाइक सिंपल स्टोरेज सर्विस. AWS फेमस अनलिमिटेड स्टोरेज. S3 क्या प्रोवाइड करता है हमें, अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है. ओके, सो इन S3 वी आर गोइंग टू सी इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स की कंपोनेंट्स, एज वेल एज S3 बकेट क्रिएशन कैसे किया जाएगा ये भी हम देखने वाले हैं. S3 वर्जनिंग, देन रेप्लिकेशन रूल्स इन S3, एंड लास्ट वन इज द S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड इंक्रिप्शन. सो बेसिकली यू कैन अपलोड फाइल्स, फोटोज, वीडियोज. ओके, सो S3 इज नथिंग बट द AWS गूगल ड्राइव, बट मच मोर पावरफुल. जो हमारे मोबाइल में गूगल ड्राइव है उससे ज़्यादा पावरफुल AWS का, मतलब उसे AWS का गूगल ड्राइव माना जाता है. So we are going to see the IAM. IAM is the one of the most core service in AWS. IAM stands for Identity and Access Management. So it is like a security guard of AWS. IAM को एक AWS का security guard भी माना जाता है. So in that it gives permissions, set rules, ensures no one sneaks in. So यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके की कंपोनेंट्स, फिर IAM यूजर्स एंड यूजर ग्रुप क्या होते हैं, IAM का रोल क्या है, कैसे वो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन हम उस पर कर सकते हैं IAM पे, ये सब हम देखने वाले हैं इन आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस. सो नेक्स्ट इज द EFS. EFS stand for Elastic File System. It shares storage accessible from multiple servers at once. Okay, EFS में स्टोरेज शेयर किया जाता है विद इन द मल्टीपल यूजर्स. तो यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज EFS, क्या है EFS, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है,
that we are going to see. So next है RDS, that is Relational Database Service. So RDS is nothing but it manages database like MySQL, PostgreSQL. Like AWS does the boring admin work, you just focus on using it. So in this we are going to see its introduction, what are the types of database engines, RDS instance creation, and इसका हमें हैंड्स ऑन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सर्विस है हमारी एप्लीकेशन सर्विस. So application service, in this we will also cover the application service like SNS, like simple notification service, or SQS, like simple queue service. Basically it is the messaging services. And then CloudWatch. CloudWatch is like a CCTV. CloudWatch एक CCTV कैमरा की तरह होता है जो AWS के रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है, अलर्ट करता है, and it keeps eye on your system's health. So this will be covered in the application services. So application and monitoring services में हम एक कवर करने वाले लाइक CloudWatch, then SNS SQS, alarms, CloudWatch event bridge, उसके CloudWatch का अलार्म कैसे होता है, उसका विजुअलाइजेशन कैसे होता है एंड ऑल. सो हमारी लास्ट सर्विस है राउट 53. तो राउट 53 इज क्या होता है? दिस इज द सर्विस दैट हैंडल्स DNS. DNS इज नथिंग बट द डोमेन नेम सिस्टम. So in simple words, when you type google.com, route 53 is like the GPS that takes you to the right server. Okay, so we will explore hosted zones, policies and record sets. So in route 53 we are going to see its introduction, its components, its policies and the record states in route 53. और ये सब AWS की सर्विसेज होने के बाद हम 2 मेजर इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट भी कवर करने वाले हैं. So this is all about the syllabus of our AWS series. So this won't be just theory. Almost every topic includes hands-on lab. So if you follow along, by the end of this service, you won't just know AWS. Okay, so you will have actual done AWS. So that's our full syllabus covering basic Linux fundamentals, core AWS services, its application services, monitoring services and route 53. So I will make sure to mix in real life examples, funny analogies and even some mini projects so it never feels boring. हम सिर्फ थ्योरी नहीं देखने वाले हैं, हम ईच एंड एवरी सर्विसेज के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके देखने वाले हैं. So if you are excited, drop a comment with the service you are most curious about. So personally I love teaching S3 because it's simple and super powerful. And don't forget, learning cloud is like learning swimming. So you can't just watch videos, you need to jump in. So be ready for a lot of practicals. Alright, that's for today. In the next video we are going to see how to create account, like AWS account creation. So thank you. आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. स्टे ट्यून. थैंक यू. बाय बाय.